हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आर कैंपिंग मनाली में। तो दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं एक बार फिर से कैंपिंग करने। तो आज जैसा पता आपको सर्वाइवल कैंपिंग करता हूं मैं। तो आज मैं यहां पे एक सर्वाइविंग शेल्टर बनाऊंगा और सर्वाइविंग स्किल और साथ में कैंपिंग करेंगे बढ़िया। तो अभी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी और जो शेल्टर बनाने के लिए उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अभी जो देख रहे हैं आप, जो मैं ये लकड़ियाँ काट रहा हूँ, ये बर्फ़ से गिरे हुए पेड़ है। तो कोई हरा पेड़ नहीं काट रहे हम, क्योंकि कैंपिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो है पेड़ लगाते हैं और नेचर को बचाने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद यहाँ पे मेरा जो सर्वाइवल शेल्टर वो तैयार हो गया है। तो आप कमेंट में बताना कि कैसा बना ये। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इसे बनाने में।
तो दोस्तों यहाँ पे अपना खाना बन रहा है और अंधेरा भी हो गया है। तो सोलो कैंपिंग करने में मज़ा तो आता है, लेकिन भाई जब ऐसा अंधेरा होता है ना तो डर भी होता है थोड़ा, क्योंकि ये जंगली जानवरों का एरिया है, भालू और शेर यहाँ पे आते रहते हैं। तो अभी बनाएंगे खाना, उसके बाद करेंगे रेस्ट और बॉनफायर का मज़ा लेंगे आज। तो अभी नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं देखने में, तो अभी बॉनफायर के मज़े लेते हैं और खाना भी बनाते हैं। तो दोस्तों अभी खाना पीना हो गया है और बॉनफायर के पास भी बैठा मैं। अभी लगभग रात के 11 बज रहे हैं, तो अभी करते हैं रेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।